Honorable Court. If I may be allowed to read, and I'll say what actually it entails. So, without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers, so that is first consideration, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights is involved. So only if there is a question of fundamental rights is involved. And here it is a question of fundamental right which has been involved and a question of public importance. So only if a question arises, whether or not any right has been violated or not, or breached or not, in my humble submission. Which fundamental right is the petitioner seeking to enforce? That's a question. If a question relating to fund, so one of the rights is access to justice, for example. No, it is with reference to the fundamental right, है ना? आप जो read कर रहे हैं वो public importance कर रहे हैं. With reference to the fundamental right. Lordship, in fact, if I may, conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved. If I may put it this way. You cannot read in bits and pieces. No. If I may put it this way, the rule of access to justice is actually a thread that run across all the fundamental rights. What if the law provides access to justice? The law access to justice is Article 4 and 8, and in fact there are judgments of this Honorable Court, as your Lordship, Mr. Chief Justice was saying in the first hearing. In fact, there are multiple judgments of this Honorable Court, but the only judgments which perhaps are binding of this Honorable Court are those of 15 or larger benches. So of course it is open for your Lordship to revisit those cases. If your Lordship, Counsel, how is the petitioner's access to justice impaired by this law? Lordship, the reason that if I talk about lawyers, the petitioner is also a lawyer. Petitioner is also a lawyer. Maybe a lawyer, access to justice jo hai, how is that being affected? Because if I have a petition and that I want to bring under Article 184, I am prevented by this committee because it will first go to the committee. They may or may not decide that this petition should be put before the Honorable Supreme Court. What I am submitting is, if I may be allowed to complete my argument. If the Chief Justice has exclusive rights, then access to justice is not affected. No, the Chief Justice is not, there is no provision prior to this law that the Honorable Chief Justice will examine the petition. It is his prerogative whether he fixes it for hearing or not, but he will not decide whether this petition should go for hearing or not, whereas this committee is going to decide, and it is not clear from this law whether there will be a right of hearing or not. I just want a clarification. Is your interpretation of Section 3 of the Act that it's a determination by the three-member committee which matter can be heard or not, or is it merely determining who will hear the matter? Not if, पढ़ लेना उसकी language देखना, or if it will be heard. जी, मेरी ये petition का मालूम ये petition छोड़िए, कानून पढ़िए ना. जी, मैं कानून ही पढ़ रहा हूँ, page 9 पे है. ये जरा वजाहत कर दें इस दोनों बातों में. Page 9 पे है. Mr. Hassan, जी sir. I think you are going ahead of the argument. You are going into the nitty-gritty of Section 3 and 4 and 5 and 7. The first question that needs to be answered is, जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जी एक्सेस टू जस्टिस और कौन सा फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है. नाउ एक्सेस टू जस्टिस इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. और व्हाट इज एक्सेस टू जस्टिस? एक्सेस टू जस्टिस इज टू बी एबल टू अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट और अ कोर्ट व्हिच इज इंडिपेंडेंट. सो वेयर एनी लॉ or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. Number one. आप हमें ये आर्गुमेंट बताइए कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस का फंडामेंटल राइट है, नंबर वन, ये किस तरह अफेक्ट होता है.
Number two, अगर ये fundamental right affect होता है, तो that by itself, by definition, is a question of public importance. Number two. Number three, the argument whether it is competent, maintainable, not maintainable, I think we have gone beyond that. The very fact that one side is saying it does not affect independence of judiciary. The other side is saying it does affect the independence of judiciary. And this court is called upon to examine whether it does or it does not. So the very fact that we are examining that question itself shows that it is a question that needs to be examined and is therefore a maintainable issue or a petition. In fact, related to that also is a question. We are not debating whether the Mr. law Hassan, is good Mr. or Hassan, bad. We are, Mr. Hassan, If I may request Fine. my distinguished colleague that let Mr. Hassan at least address what one of us have asked, because otherwise we won't. my If you can question actually is totally related to what has been asked. In the context of access to justice, I had previously asked that when a full court sits, the right of appeal is now not available to the petitioner. If the objective of the law was to give access to justice, and the response of the Federation is that, well, when the committee decides that a full court should sit, then there's no right of appeal. Does that bar the right of access to justice? Is this a substantive right that is being prevented? Or can we just say that the power that was vested in the Chief Justice, to that extent, it was incorrect, but now that the committee will decide that a bench of 10, 11, or 12 will sit, and so the right of appeal is blocked. Does that affect the right of access to justice? that, your leadership, is a very pertinent question. That, in my humble opinion, it does, but I have an answer to that, howsoever irrational that argument may appear, but maybe the framers of the Constitution did not have in mind that that could be a solution, but there is a solution in the Constitution which could perhaps, in a very, let's say, extraordinary situation, may be resorted to by the Honorable Chief Justice if a full court hears. And that's contained in Article 186. Let me just find it out. Where there is a power, if there are reasons, substantial reasons, the Honorable Chief Justice can actually increase the strength of the Honorable Supreme Court. That's a different situation. Yes, in but fact, by not giving the right of appeal, it basically means either the Supreme Court can never sit as a full bench and can never sit as a 10 or 11, 12 member bench. That is one way of looking at it, because that ability of the court to constitute its bench, a larger bench where required, is now blocked if the right of appeal has to be given meaning. the right of appeal under Article 185 of this Constitution is itself given what could be a right of appeal. And in fact, that is one of my arguments when I'll come to that provision, that Article 1853 does not actually empowers the Honorable Supreme Court in all other matters which are not mentioned there to have a direct right of appeal. It is only by way of special leave to appeal. So there is a distinction that perhaps the drafters of this legislation may not have appreciated. But let me come to your Lordship's question. In fact, there is another question which leads to what your Lordship is saying, is that what we are saying is, howsoever good the law may be, it has to follow a certain provision. Whatsoever, we don't doubt the intentions of the Parliament. Parliament is, of course, supreme. Supreme Court is, I believe, the supreme thing over the Supreme Court and the Parliament is the Constitution. The Honorable Supreme Court is bound by the Constitution, the Parliament is bound by the Constitution. And one of the points that I have mentioned later on is that the oath of offices, all the oaths, whether it's of the Chief Justice, President, Prime Minister, Parliamentarian, they have three common words: preserve, protect, and defend. The Constitution. Oaths mein. So there is a duty of everyone who takes an oath. Ji. My Lord, Schedule 3, Oath of Office, President. President Kanit?
तो जजेस का पढ़िए। जजेस का पढ़ देते हैं मानो। जी, ये आप जो आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं जरा बताएं तो इसकी बुनियाद तो रखिए पहले। हेलो बुनियाद पढ़िए ना, हजूर क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें से? Chief Justice of Pakistan of the High Court or Judge of the Supreme Court of High Court, Articles 178, 194. I, so and so, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan or a Judge of the Supreme Court of Pakistan or Chief Justice or a Judge of the High Court for the province or provinces of, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. So the ये जो Constitution. लफ्ज हैं, 3 लफ्ज एंड द लॉ, ये जरा मद्देनजर रखिए और आगे बताइए पॉइंट आपका क्या है? That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah आप बताइए क्या पॉइंट आप? Malad, the point is this, that the Constitution has demarked the powers of the Parliament. नहीं, आप आइन के ओथ की बात कर रहे जी, थे, मैं अब आपने उसको अधूरा छोड़ दिया आर्गुमेंट नहीं को। मालूम उधर नहीं छोड़ा, मैं आ रहा हूँ उस बहस को पूरी मुकम्मल तो कर लें कि हमें समझ तो आ जाए आपकी बात। मालूम the Parliament, पार्लियामेंट की बात इसमें कोई आ ही नहीं रही ओथ में। मैं ओथ में मालूम पार्लियामेंट की अगर आप मेंबर्स की ओथ देखें, उनमें भी जो मैं आर्गुमेंट ले रहा था, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, so it is equally incumbent upon the Parliament to follow what the Constitution says. The Constitution has given them power of legislation. इसमें कोई दो राय हो सकती है, इसमें कोई दो राय हो सकती हैं। मतलब 142 में और read with entry 55, they have a certain limitation. हसन साहब देखिए आपको हम पूरा आपकी कदर करते हैं और सुनेंगे, अगर आप दलाइल ही नहीं दे रहे हैं, आपने ओथ को टच किया, अब आप दूसरी बात चलेगा, या तो इस बात को छोड़ दीजिए, कोई और बात बताएं। मुझे अभी तक मैंने कलम इस्तेमाल नहीं किया, मैं लिखूं क्या आपका दलाइल समझूंगा तो लिखूंगा ना। Let me then proceed the way I have proceeded rather than, you know. आपने ओथ का जिक्र किया, मैंने कहा पढ़ दीजिए, उसमें एंड लॉ लिखा हुआ है, आप वजाहत नहीं कर रहे हैं उधर। मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि इसमें the Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework. The Parliament has to remain within the constitutional अगर जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं जी, फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। लेकर आए ना मालूम, इसीलिए नहीं ये मार्शल लॉ नहीं, ये एक पार्लियामान ने कानून फैसला किया। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। ये बताइए, आप बता ही नहीं रहे ओथ की बात हुई, आपका आर्गुमेंट खत्म। नहीं मालूम खत्म नहीं, मालूम ओथ में मालूम एग्जैक्टली इस पे आ जाए, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है कि नहीं है? अगर अभी इजाजत नहीं, है तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है या नहीं है? मालूम नहीं है, नहीं, वो बता दीजिएगा कैसे नहीं। मालूम आप 142 देखें, 142 को देख लीजिए। वन 142 के अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज, subject to the constitution, then it again says subject to the constitution. So this is restricted power. The Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Now if 142A is read with entry 55, it does not give them any power which controls the procedure, because that's a constitutional power under आर्टिकल 55 आइटम 55 में है ना, आप वो पढ़ लें, उसका तशरीह की बात है उसकी। मतलब इसको सी भी पढ़ लें हम, अगर 142 जो मर्जी पढ़ना चाहें, 142 के ऊपर आए हुए हैं तो सी में देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोहिबिशन ऑन दैट आल्सो, इसको भी मद्देनजर रखना जरूरी है। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, द प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट
have the power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. So everything revolves around the अच्छा, एक federal. चीज आप ये बहस कर रहे हैं कि अगर वो लिखा ना हो, अंदराज ना हो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, तब पार्लियामान उसके मुतालिक कोई कानून नहीं बना सकती है, हाँ या ना? मतलब that would be subject to your lordship's भाई interpretation. आपकी क्या राय है? मेरी राय हमें तो अपनी ये- राय पता है, मतलब- आप अपनी राय मतलब बताएं। Very honestly, the entries are just a guideline. It can be interpreted by your lordship. भाई आपकी I राय am here पूछ to रहे हैं। assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I भाई have तो to. आपकी राय क्या है, असिस्ट कीजिए ना। My lord, मेरी राय ये है कि these words of 55, अगर आप इजाजत दें मैं पढ़ देता हूँ. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. इस wording में even with अच्छा एक सेकंड, इनकी जो बहस है अदर साइड की, इनने जो नोट्स फाइल किए उन्होंने ये फरमाया है कि हम आपके हकूक सुप्रीम कोर्ट के सलब नहीं कर रहे हैं या कम नहीं कर रहे हैं, हम इनको बढ़ा रहे हैं। पहले 3 लोग या 5 लोग या पूरी जो भी 5-6-7 की बेंच सुन सकती थी एक केस, अब हमने एक अपील का भी इख्तियार दे दिया है। तो ये पॉइंट आप उधर ले जा रहे हैं ना, तो इसमें हम तो अपने पास तो अपील नहीं सुनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। तो इसमें आप बस आपका कहना है कि जो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया वो हतमी होना चाहिए, उस पर कोई अपील नहीं होना चाहिए, ये आपका मौक़िफ़ नहीं है? मालूम, मेरा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर समझाइए। जो मेरा मौक़िफ़ ये है, जो भी आप राइट दें, जो भी आप लॉ बनाएं, इट हैज़ टू फॉलो what is provided in the constitution. अपनी मर्जी से पार्लियामेंट जो है whatever they think is right नहीं तो is not पार्लियामेंट ये कह रही है, permissive. पार्लियामान ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन यही को तो वो अमेंड कर लें। उनकी नजर में अब आपने पिटीशन फाइल की ना, उनकी नजर में उन्होंने सही किया है और उन्होंने मजीद एक फोरम दे दिया है। ठीक है, 3 लोगों ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब आप अगर हिस्टोरिकली इस बात को कोई बात ही नहीं कर रहे, हिस्टोरिकली अब बात को देखें तो बहुत तनकीद की है वकीलों ने बिलखुसूस, और जिसको कहते हैं ना सोशल समाज ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार इस्तेमाल किए हैं 184(3) के तहत इख्तियारात। तो इसमें बहुत से लोगों के पर्सनल हकूक, एक होता है बुनियादी बड़ी बड़ी बातें कि ब्रिक किल्न वर्कर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो आप उन मामलों में भी चले गए हैं, इलेक्शन मैटर्स में चले गए हैं, रेट ऑफ वो क्या होना चाहिए, शक्कर की प्राइस की क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को ये आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस हतमी हो गया। तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हदूद में रहती, पहली बात आपने हदूद की तजावज़ किया है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम कानून बनाएं और आपको याद दहानी करवाएं, मगर आप अगर याद दहानी नहीं करते हैं तो आप ही लोग, एक इस पर नज़रसानी का बहुत हदूद कम होता है, एक आप इस पर अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था। ठीक है, तो इससे एक आम शहरी के हकूक पे जो आप खड़े हुए हैं ना हमारे सामने शहरी की हैसियत में, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। आप सपोज आप किसी चीज़ में आते और आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीठ जोड़ने लगते कि एक हक, बुनियादी हकूक, अपील का तो दुनिया के हर आइन और कानून में दिया गया है, आपने तो एक कानून का हक भी हमें नहीं दिया है। तो फिर आपको क्या सेहत पे असर पड़ रहा है? हमारे सेहत पे शायद असर पड़े कि हमारे एक दफा हमने कह दिया बस हर्फ आखिर है। मतलब आपने क्योंकि मना किया था कि इधर उधर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, मैं नहीं गया, लेकिन आई विल आंसर टू योर लॉर्डशिप क्वेश्चन। देखिए हर चीज को देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। जी, I am answering this question. My lord, if I may be permitted, this is not the first time that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So my argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases
where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say आप that, मेरे सवाल का तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। मतलब यही उसका जवाब है कि जो आप आउटक्राई की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कहा आपको नहीं, राइट मैं दे आपको रहे बता रहा हैं, हूँ आपको नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा कि एक अपील आपको हक मिल जाए अपील का। constitution is not being followed, that is a major नुकसान। आपको तकलीफ हो रही है इससे? मतलब मुझे इससे हो रही है because then the Supreme Court will swing after every year, every time a new Chief Justice will come, there would be no certainty of the decisions, there would be no certainty of benches, that will affect the socio-economic rights of the Pakistan एक सेकंड ठहरिए, people एक सेकंड also। ठहरिए, ये एक सेकंड, ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है, फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट थे सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं मतलब हमसे? मैं ये कह रहा हूँ कि everything has to be come within the honorable Supreme Court. The honorable Supreme Court has to sit down together and come and maybe amend their rules, amend the laws. Learned Council, ये बताइए, इंसाफ तक रसाई अगर पार्लियामेंट ने देनी हो हक, उस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ तक रसाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा पार्लियामेंट को? मतलब इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, एक राइट ऑफ अपील दी है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस एंड राइट टू अपील relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. That remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects to it. Mr. Hassan, देखिए मैं आपको सर मैं अगर इनको सर राइट ऑफ अपील बाय अ स्टैट्यूट टू अ सुप्रीम कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, द राइट ऑफ अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बहुत से सारे लॉज हैं जिसके अंदर अपील प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें डायरेक्टली अपील कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है अपील, और एक्सेस ऑफ तो आप जस्टिस कहेंगे उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 204 के साथ अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ Mr. पे Hassan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal. Where the Constitution needed to provide an appeal, it provided an appeal. Absolutely. 184 is original jurisdiction. Okay? उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जिधर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, उसमें अपील थ्रू ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए, अब जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, then the only way to interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 180